Hello students, now today in this session we will discuss balancing of a chemical equation. Students, chemical reactions involve rearrangement of atoms on both sides. Therefore, atoms are neither lost nor gained in a chemical chain. So, the number of atoms on the reactant and product साइड शुड बी इक्वल. मतलब ये कि जब तक कोई इक्वेशन अगर ऐसा है जिसमें दोनों साइड में रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है एलिमेंट्स के, तब तक वो इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन होगा. ओके, नाउ स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. अगर वो अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस भी करेंगे. स्टेप फर्स्ट, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन. मतलब ये कि सबसे पहले हमको वो केमिकल इक्वेशन लिखना होगा. स्टेप टू, write the number of atoms of every element on the reactant side and the product side. मतलब ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को लिखेंगे. स्टेप थर्ड, बैलेंस द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वेदर इट इज अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट साइड. ओके, रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट मतलब ये कि जिनके पास भी नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है पहले उनको सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो या फिर रिएक्टेंट साइड में हो. स्टेप फोर, आफ्टर सेलेक्टिंग द कंपाउंड विथ अ वीक फार्मूला बैलेंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, देन बैलेंस द रेस्ट ऑफ द एटम्स. हाईएस्ट एटम्स वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, अब उसके करस्पॉन्डिंग बाकी सारी चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स के एटम्स को बैलेंस कर लेंगे. ओके, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कुछ में डिवीजन भी करना पड़ सकता है. ओके, नाउ स्टेप 5, फाइनली रीचेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय चेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड. मतलब ये कि लास्ट में फिर से चेक करना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स, ये लाइन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल. वो इक्वल है कि नहीं. अगर वो इक्वल है तो वो इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा. हमारे पास एक एग्जांपल है. क्वेश्चन इज व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग दीज स्टेप्स, follow step number 1, write down the chemical equation. So write down chemical equation. Calcium react with calcium plus oxygen gives calcium oxide. Now step 2, write the number of atoms of every element on the reactant side and the product side. अब हम दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को लिखेंगे. तो फिर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे, तो ऑक्सीजन O2, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं. ठीक है, ये इनका केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन का. नाउ बैलेंस द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं. तो अब इसकी करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 होने चाहिए. देन मल्टीप्लाई बाई 2. ओके, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड इन प्रोडक्ट एंड आल्सो वी हैव 2 ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट. ऑक्सीजन 2 एटम्स इन ऑक्सीजन. नाउ वी हैव 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम ऑन प्रोडक्ट साइड एंड वी हैव only one atom of कैल्शियम ऑन रिएक्टेंट साइड. तो मतलब ये इधर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसको अगले स्टेप में, स्टेप 4 में क्या होगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि लास्ट स्टेप 5, वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस बाय चेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड. मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं है. वी हैव 2 कैल्शियम ऑन प्रोडक्ट साइड, वी हैव आल्सो 2 कैल्शियम ऑन रिएक्टेंट साइड, वी हैव 2 ऑक्सीजन atoms on product side and we have also 2 oxygen atoms on reactant side. मतलब ये हुआ, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन. ये इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस है. तो इसी स्टेप को फॉलो करके कुछ और इक्वेशन भी आप बैलेंस कर सकते हो. देखते हैं.
Now we have another question. Sodium reacting with chlorine gives sodium chloride. मतलब ये कि सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड. नाउ राइट द नंबर ऑफ एटम्स. ओके, देन वी हैव Na plus Cl2 gives NaCl, sodium chloride. Now step third, balance the compound which has maximum number of atoms. क्लोरीन के पास 2 एटम्स हैं, बाकी उधर एक ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम उधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 NaCl. अब क्या होगा, अब हमारे पास सोडियम 1 है, सोडियम 2 है प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब फिर हमको NaCl2 gives 2 NaCl. अब यहाँ पे दो सोडियम एटम्स हैं और यहाँ पे सोडियम के एक ही एटम है, तो इसका मतलब रिजल्ट फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. 2Na plus Cl2 is equals to 2 NaCl. Now this is a balanced equation. This is balanced equation. Okay. Now next question. Hydrogen reacting with oxygen gives water molecule. Now hydrogen reacting with oxygen gives water. Now then step 2, we have H2 plus O2 gives H2O. ओके, अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स हैं और यहाँ पे एक ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप में H2 plus O2 gives H2O. अब क्या होगा, अब हम प्रोडक्ट साइड में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वलाइज हो जाए. ओके, इक्वल हो जाए. अब यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है हमको हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 ही है, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा. देन इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 2H2. ओके, मीन्स 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड also we have 2 atoms of oxygen on product side. So this is a balanced equation. Now next, question is sulfur reacting with oxygen. Okay, sulfur reacting with oxygen to form sulfur oxide. Now this is chemical equation. Now step 2, sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide. Now we have only one sulfur atom on product side and also we have only one sulfur atom of on reactant side. 2 oxygen on product side, we have 2 oxygen on reactant side. So this is a balanced equation. No need to balance this equation. This is a balanced equation. Now next, calcium next question, calcium reacting with chlorine. Calcium reacting with chlorine gives calcium chloride. Okay, next question, calcium reacting with chlorine to form calcium chloride.
Now, step 2, Ca plus Cl2 gives CaCl2. अब इसमें भी देखेंगे, इधर एक प्रोडक्ट साइड में एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम एटम है, रिएक्टेंट में भी एक ही है. क्लोरीन atoms on product side we have 2 chlorine atoms, on reactant side we have 2 chlorine atoms. So this is a balance equation. This is a balance equation. Okay, so using these steps we can balance any unbalanced equation. Thank you.